Hello everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. This is the Hindu newspaper analysis for today, that is September 9, 2022. तो आज है 9 सितंबर 2022 और आज हम न्यूज़पेपर को एनालाइज करने जा रहे हैं. This is going to be a really interesting lecture for all of you because today we are going to understand the articles in the Hindu newspaper from the perspective of mains. आज हम मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स को समझने वाले हैं. Alright, so be ready with your current affairs registers or the notebooks that you have prepared, and we are going to understand each and every article. Then you are going to summarize them in your own words. Don't copy and paste, just summarize them. Okay, let's get started. तो फर्स्ट पेज पे ये आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 132 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज स्कोर ड्रॉप्स. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इन प्रीलिम्स ना lot of questions have been asked from the human development index from different indices. अलग अलग reports and indices पास होती है ना, तो पिछले कुछ सालों से ना indices and reports पे काफी फोकस करने लगा है यूपीएससी. That is why please make sure that you remember the last 7 to 8 months indices or reports that have been launched. एग्जाम से पिछले 7 से 8 महीने में जितने भी indices या reports launch होते हैं उनकी आपको नजर रखनी है, उनका आपको लिस्ट बनाकर रखना है. नॉट द लास्ट 2 to 3 years, नो, लास्ट 7 to 8 months के indices पे स्पेशल अटेंशन यू हैव टू पे. All right, okay, and this topic is also important for essay. If an essay comes on education or health infrastructure etc, then you can quote these indices and the reports. अगर मान लो health infrastructure या education या sustainable development पे कोई essay आता है तो आप इस तरीके के indices reports को quote कर सकते हो. That would help you a lot. Now, HDI, what exactly it is? It is a statistical tool which is used to measure a country's overall accomplishment in the social dimensions, in the economic field, what the company has accomplished. That is measured through the Human Development Index, and it was created by two leading economists of India and Pakistan, Amartya Sen and Mehboob ul Haq. It was launched first in the year 1990. तो ये आपके कुछ important points हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसको दो leading economists ने develop किया था, अमर्त्य सेन from India and महबूब उल हक from Pakistan. पहली बार इसको 1990 में launch किया गया था. It's a kind of statistical tool. Now we will not cram anything in this lecture, we will understand. हम कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, हम समझेंगे. So when you understand, you have to understand that the name is Human Development Index. इंसान के development को measure करने वाला index, and we know that when a human develops, the nation, the society develops. जब एक इंसान develop करता है उसके साथ उसका समाज develop करता है, समाज develop करता है तो nation develop करता है. So human development is linked to the development of society. Further, it is linked to the development of a nation. This is how you need to understand the articles if you want to write in your mains exam. Because we cram the current affairs, we rectify the current affairs, we just learn them, blindly. That is why we are unable to form answers or write answers in our actual exam. क्योंकि हम यहाँ current affairs को रट रहे होते हैं ना, तो इसलिए हमें वहाँ content बनाना नहीं आ पाता. It's very simple to write if you have understood the core concepts. Okay? तो यहाँ पर this topic is also going to help you in GS paper 1, even GS paper 2, your ethics का paper and your paper 3. okay, तो इसलिए ये बहुत important topic है. Now, when we talk about the Human Development Index, there are different dimensions that are measured using this index. Those dimensions are, basically are measured. For example, dimensions are knowledge, long and healthy life, and decent standard of living. This is another important aspect. So, Human Development Index किन dimensions को measure करता है? ज्ञान को, healthy, long and healthy life, and एक decent standard of living. इन तीनों डायमेंशंस को मेजर किया जाता है. एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको पब्लिश करता है. दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी हैव मेमोराइज्ड एंड अंडरस्टूड फॉर प्री एंड मेंस. ओके, ऑल्सो इट वाज क्रिएटेड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द जीडीपी बिकॉज ओनली द इंक्रीमेंट इन जीडीपी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद ओवरऑल अकम्पलिशमेंट एंड गुड हेल्थ ऑफ अ नेशन. डोंट थिंक दैट ओनली इंक्रीजिंग जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ प्रोग्रेसिव नेशन. सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है किसी नेशन का तो वो नेशन प्रोग्रेस कर रहा है. दिस इज अ मिथ, ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू लुक एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ओके, दैट इज through the help of these indices.
All right, because this index focuses on human development, and when human develops, only then the economy and the nation develops. So this is another important point that you have to keep in mind. India has ranked 132 out of 191 countries. So if you are giving 2023 का pre exam, then this particular fact is important. अगर आप 2023 का pre दे रहे हैं तो ये ranking important है. You have to remember it. India, and you can what you can do is the ranking of India in different reports and indices in the last 1 year. Write it down in a piece of paper and stick it in front of you on your study table or the wall. ठीक है, जहां आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर ये इंडिसेस और रिपोर्ट्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है उसको लिखकर अटैच कर लो सामने, so that you can revise it daily in the morning because these numbers are important. इंडिया का 132 रैंक है 191 से, ये आपको पॉइंट याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर HDI we have studied. Now going on to the next important article, राजपथ a symbol of slavery erased. आपको पता है न्यू दिल्ली में राजपथ है, ठीक है, वहां पर सारे हाउसेज, पार्लियामेंट और जो राष्ट्रपति भवन ये सब आपके कनेक्टेड हैं. सो अ न्यू नेम हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर रोड विच इज कर्तव्य पथ. Kartavya means duty. And why PM Modi is changing the names of these places? Because there is also one example. There was a race course road in New Delhi. Now it has been renamed as Lok Kalyan Marg. So why these names are being changed? Why? Because Prime Minister Modi has taken this oath that we are going to remove the names and symbols which remind us of the British era. जो भी हमें colonial era की याद दिलाते हैं ना, names या symbols, हम उनको हटा देंगे, erase कर देंगे ताकि हमें उस colonial era की याद ना रहे. इसलिए हम ये जगहों के नाम, roads के नाम change कर रहे हैं so that the colonial mindset can be erased. Okay, now when we talk about Rajpath, the history part is covered. तो यहाँ पर modern history का part इसमें covered है, and that is why this article is important from the perspective of GS paper 1. Okay, तो ये आर्टिकल आपका पेपर 1 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव हिस्ट्री एज ऑप्शनल देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पर कवर होंगे. सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दीज पार्ट ऑफ सिलेबस विच दीज आर्टिकल्स आर कवरिंग, so that you can also read newspaper yourself, understanding how the articles can be linked to your syllabus. ऐसा कुछ नहीं है, आउट ऑफ द कोर्स कुछ नहीं होता, सब कुछ आपके सिलेबस से लिंक्ड है, बट हमको समझदारी की जरूरत है कि कैसे हमें लिंक बिठाना है. So in 1911 years are important in history. हिस्ट्री में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो इफ आई गिव यू अ शॉर्ट टिप और ट्रिक टू रिमेंबर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर अ स्मॉल रजिस्टर. On one side ऐसे, you know, on the page of the register, here you can write year. ठीक है, I'll just create a better, just give me a second. Yes, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो year, यहाँ आप लिख सकते हो event that happened, ठीक है, and significance. All right, तो यहाँ पर on the page of your register, every page you can create this kind of table. So here you will write the year, for example 1911. British Imperial Government and Viceroy Administration determined that capital of British Indian Empire should be moved from Calcutta to Delhi. So what happened? Event that the British administration determined that the capital of British Indian Empire will be shifted from Calcutta to Delhi. Okay, तो यहाँ पर आप ये event लिख सकते हो. Accordingly, construction in that year began on the district of New Delhi, which would serve as the purpose-built administrative capital. तो यहाँ significance क्या हो जाएगा? Significance में you will write Delhi was now becoming the administrative capital of British Indian Empire. So this is how, this is A, B, ऐसे करके ना you can maintain an year event significance chart in your register, and then it will be very helpful for you when you revise. ठीक है, जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे ना, you will not have to waste your time in going through the entire book again. ठीक है, you can revise directly from here, and this kind of chart is really important for prelims and answer writing. ये आपको ना रोज अब डेली इफ यू विल रिवाइज इट, इट विल कम ऑन योर फिंगर टिप्स. अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे सारे इवेंट, तो आपको याद रहेगा. ऐसा नहीं एक बार लिख कर रख दिया, हर दिन या हर हफ्ते या हर वीकेंड पे रिवाइज करो. This is also a short trick to remember events in modern history. Nothing is impossible, everything is possible. It's your attitude which makes things possible and impossible. Remember that. So modern Indian history again is very easy if you make a strategy. Okay, without strategy everything is tough, nothing is achievable. Now another important point, the British Raj duly turned to Sir Edwin Lutyens to construct the new city. तो हमको भी पता है जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है उनकी कंस्ट्रक्शन किसने की है? सर एडविन ल्यूटेंस ने की है. दिस ऑल्सो यू कैन एड ओवर हियर.
Lutens conceived of a modern imperial city centered around the ceremonial axis, and such axis being the large boulevard now called the Rajpath. तो ये जो Rajpath था, what was it? It was the ceremonial axis, okay, where all the large administrative functioning departments and buildings would be constructed. This Rajpath has been now changed, the name has been changed, it is now Kartavya Path, that is the path to our duty, okay, which would remind the ministers if they are coming to Rajpath, they will be reminded that this is the Kartavya Path, and here we are coming, if we are coming here to discharge our duties. Alright, तो ये points आपको यहाँ पर याद रखने हैं. Then we have Sir Herbert Baker also, ठीक है, ये भी second architect थे इसी project में, ये point आपको याद रखना है. कर्तव्य पथ in English means boulevard of duty. It runs all the way from Rashtrapati Bhavan, President's House on Raisina Hill, through Vijay Chowk to India Gate, and it stretches westward from the National Stadium through the War Memorial Arc to the Central Secretariat buildings. तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने ये सारी जगहों के नाम अच्छे से सुने होंगे डेली बेसिस पे. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो ये तो हर वक्त अनाउंस होता ही रहता है, राइट. देन राजपथ इन हिंदी मीन्स किंग्स वे, okay, and that is why the name has been changed. It's not the king's way now, it is the way towards your duty. Alright, तो ये different राष्ट्रपति भवन है, why it was created, you can go through it in the PDF of the lecture. Coming on to the next important article, this is Tirumala Brahmotsvam now in tourism calendar. So the annual Brahmotsvam schedule at the temple of Lord Venkateswara on Tirumala Hills is now available in the national tourism calendar also. This is important for prelims. Why? Because they can ask you where the Lord Venkateswara temple is located, where the Brahmotsvam festival is celebrated. It is on the Tirumala Hills. बहुत ही spiritual hills हैं. Tirumala Hills have a spiritual significance. ठीक है, there have been many spiritual leaders, enlightened masters who have visited Tirumala Hills, including Ramana Maharishi also. Okay, then there is annual festival of Shri Kalahastishvara Swami Temple, which is in Shri Kalahasti. ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है. सो हियर लोकेशन इज इम्पोर्टेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड कल्चर. दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द टेम्पल्स and the locations. They will ask you which pair is correctly matched. So you have to be prepared for these kind of questions. Coming on to the next important article, Odisha government cancels shrimp culture lease inside Bhitarkanika. On Bhitarkanika there was a question which came in 2017 ka prelims ka question paper. So I am hoping that you are solving the PYQs also. Okay. Now what is eco-sensitive area? Let's understand that. Ecologically fragile areas, they are notified by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. Okay, that you have to remember. तो protected areas, national parks, wildlife sanctuary के आसपास ना जितने भी area 10 किलोमीटर के दरमियान आता है उसको हम eco fragile areas या eco sensitive area बोल देते हैं. कौन नोटिफाई करता है इसको? फॉरेस्ट और एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री. ठीक है, एंड purpose of declaring ESZs is to create some kind of shock absorbers. देखो, when you build a house, you see fence around the house, that is the boundary line, right? Or in your area, if you have constructed your house, then you have an entry door towards your house. आपके house में entry door होती है, ठीक है? Now why these entry doors or these fences are created? Why these boundaries are created? So that if somebody tries to attack or forcefully enter in, then your house and your people would be protected. मतलब एक तरीके से पहला शॉक जो पड़ेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से निकलना है, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी, आप निकल जाओगे. तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं. These fences are shock absorbers. Okay, the shields you can say. So similarly, these eco-sensitive areas are also shields. ये भी shield की तरह होते हैं. Okay, anything if it has to happen to the wildlife sanctuary national parks, it has to first pass through the eco-sensitive zone. So that would act as a shield. Okay, that is why these are declared. They also act as a transition zone. ठीक है, एक तरीके से ट्रांजिशन जोन भी है कि भाई लो प्रोटेक्टिव एरिया से आप हाई प्रोटेक्टेड एरिया में इको सेंसिटिव जोन के थ्रू आप पास ऑन कर सकते हो. And the Environment Protection Act 1986 does not mention the word eco-sensitive zones. That you have to remember. आपके EPA Act में ना eco-sensitive zone जैसा कोई term defined नहीं है या mentioned नहीं है. ठीक है, इसको ministry notify करती है. And it could go up to 10 kilometer around the protected area. So maximum ना 10 kilometer तक जा सकता है ये zone. Now let's solve a question on this zone. इसके ऊपर questions solve कर देते हैं. Consider the following statements. Eco-sensitive zones are notified by respective state governments only.
EPA does not mention the word eco-sensitive zone. So just now we have studied that it is not notified by state governments. It is notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, तो first statement is wrong. So A will be eliminated, C will be eliminated. Second statement is saying Environment Protection Act 1986 does not mention the word eco-sensitive zone. अब यहाँ पर हमने पढ़ा था yes it does not mention. Second statement is correct, so B is correct. D would be eliminated. This is how, based on your knowledge, you can use elimination method also in your prelims examination. Now यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि this shrimp culture is going to be cancelled inside Bhitarkanika because obviously it's a wildlife sanctuary, and when it comes to eco-sensitive zone, shrimp culture, it's a part of aquaculture, it is now being cancelled. तो shrimp farming क्या होती है? What is shrimp farming? It is common in Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. Shrimp farming basically is a kind of marine wherein the marine shrimps are produced for human consumption. ओके तो वो श्रिम्प फार्मिंग आती है, एक्वाकल्चर का ये पार्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. A very important article in today's Hindu newspaper, which is the heckler's veto cannot be allowed. ये term after 2016, this term again has come to news. Okay, because of Salman Rushdie's incident also and because of the hijab incident also. So इसलिए ये काफी important हो जाता है for your PubAd optional, for your essay, for your GS paper 4 and for your GS paper 2, even for prelims. तो ये सारे points, topics आपके cover हो रहे हैं Heckler's veto के अंदर. What exactly is it and why it is news? Let us understand. So there was a petition which was filed in the court, wherein the student in Karnataka was not allowed to enter now because she was wearing a hijab. So that case is going on right now. So the lawyer who is or the advocate who is fighting to help that student in the court, he said, if I wear a headscarf and someone is offended and shouts slogans, the police cannot turn to me and say not to wear hijab. That will be heckler's veto. तो यहाँ पर जो एडवोकेट उस लड़की के लिए केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि मान लो मैं हिजाब पहनता हूँ और किसी को मेरे हिजाब पहनने से किसी को ऑफेंडेड फील हो रहा है और वो मुझ पे चिल्लाने लगता है, मुझे गाली देने लगता है और स्लोगन शाउट करने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस आकर मुझे बोलेगी तुम हिजाब मत पहनो. ठीक है, पुलिस को उसको रोकना चाहिए बिकॉज दैट पर्सन बेसिकली उसको कोई किसी चीज से ऑफेंसिव फील हो रहा है, मेरे नॉर्मल हेडस्कार्फ पहनने से ऑफेंसिव फील हो रहा है, तो दैट इज हिज फॉल्ट. उसको जाके पुलिस को रोकना चाहिए कि भाई आई हैव द फंडामेंटल राइट ना, आर्टिकल 25 मेरे पास भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो अगर पुलिस मुझे ही आकर रोक रही है तो वो हेकलर्स वेटो है. ये कहना है देवदत्त कामत का. ही देवदत्त कामत, सीनियर एडवोकेट, ही सेड दिस. ओके, so here what exactly is heckler's veto? Let us understand. So in free speech jurisprudence there is a concept called heckler's veto. Free speech की जब बात आती है ना तो उसमें एक concept आता है heckler's veto का. Basically it means ability but not the right. Ability, it's not a right, it's a ability of a private actor, of a private individual, single individual, the heckler, who is known as the heckler, to be loud and obnoxious enough to obscure the free speech of others. एक इंसान की एबिलिटी कि वो चिल्ला चिल्ला के ऑब्नॉक्शियस वे में एक्ट करके किसी और की फ्री स्पीच को दबा सकता है, उसको हम कहते हैं हेकलर वेटो. उसकी एबिलिटी, ठीक है. बाय पैटर्न अ हेकलर इज समवन हु इज अनेबल टू डिफेंड हिज आर्गुमेंट. मतलब उससे पूछोगे ना तो तुझे किस बात के ऑफेंसिव, किस बात पे ऑफेंडेड फील हो रहा है, वो समझा नहीं पाएगा तुम्हें. ठीक है, when you will ask that heckler what is the problem if the other person is wearing a scarf, headscarf or hijab or certain color of robe, then what is the problem with you? He will not be able to justify his claims and his shouting. Okay, but he will try to obscure the free speech of others. That is a heckler. उसको हम heckler बोलते हैं. ठीक है. So as mentioned above, local police and officials, बेसिकली एक केस हुआ था. ठीक है, उसमें उन्होंने इस केस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया था. इवन इन सलमान रुश्दी का केस भी हेकलर हमने देखा था, दैट पर्सन हु स्टैप्ड सलमान रुश्दी. सो बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ फ्री स्पीच दिस इज नोन एज द हेकलर्स वेटो. बाय थ्रेटनिंग पब्लिक डिसऑर्डर टू डिस्टर्ब एंड सोशली पावरफुल ग्रुप्स कैन शट डाउन क्रिटिकल और इनकन्वीनियंट स्पीच. Okay, and they will not have anything valid or rational to justify themselves. That is the heckler's veto. ठीक है, and basically ना it is also done to heckler's veto is also practiced to hurt somebody's religious sentiment etc. And that is being discussed over here. The court has adjourned the hearing right now. It will continue on Monday. Monday को देखते हैं कोर्ट क्या बात
क्या स्टेटमेंट पास करती है. एंड द advocate also said that it is state's obligation to protect my belief as long as does not violate public order, health और morality. मेरे headscarf पहनने से public health या morality या order अगर नहीं disturb हो रहा है तो आप कैसे मुझे हिजाब पहनने से रोक सकते हैं. This was the argument given by Devdutt Kamath. Okay, ये point याद रखिएगा. So this was all for today. In 20 minutes we have covered the most important articles of today's Hindu newspaper.